A very good morning to all. In my previous videos of plant kingdom, we have studied algae, bryophytes, pteridophytes, and the characteristics of gymnosperms. Now, in this video, we are going to study about the most important division of plant kingdom, that is angiosperm. So angiosperm is consist of two words, angion and sperma. Angion means covered and sperma means seeds. So these are the flowering plants that are in which the seeds are covered with by the fruits, or you can say the seeds are enclosed by the fruits. So these are the plants that have a special structure, that is flower, in which the reproductive organ of the plant exists. Okay. Then if we are talking about the habitat, we are finding these angiosperm with a wide varieties that occur from the desert area, hilly area, cold area, or you can say in the aquatic habitat. So we can say it is having a wide range of habitat. If we are talking about the size, from tiniest to the longest, or you can say the tallest trees are present in this group. Okay. So the microscopic Wolffia, that is also an angiosperm, whereas an eucalyptus that having the size of 100 meters are also present in this group. So this is the group that is having the wide varieties, gives us food, fodder, fuel, medicines, and several commercially important products that are used for completing our needs. Now, let's study the various part of the flower, because the flower is the most important feature of the angiosperms. So the first part is that is stalk, that is for the attachment of to the plant. जो पूरे बाकी के पार्ट्स हैं उनकी अटैचमेंट के लिए, या आप कह सकते हो कि पूरे फ्लावर की अटैचमेंट के लिए स्टॉक इज अवेलेबल. The next one is the receptacles. Receptacles provide the base to the various part of the plant. Okay. Then the sepals. Sepals are the green colored part beneath the petals to provide protect rising buds. जब कली की फॉर्म में फ्लावर होता है, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं. सो दीज आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ओके. कुछ फ्लावर के अंदर जो है पेटल सेपल फ्यूज होते हैं, और कुछ प्लांट के अंदर जो है पेटल एंड सेपल्स सेपरेट होते हैं. What are petals now? Petals are the bright colored leaf-like structure of the flower that attract bees, insects, and birds for the process of pollination. Okay, so the color is dependent on the pigment that is present in the flower. Okay, so the petals help us to differentiate one flower from another. आपको जो petals के कारण ही जो है flower attractive लगता है. ओके. तो पेटल की अरेंजमेंट अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग होती है. इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज. As we know, the angiosperms are the most developed plant. Okay, so it is completely developed with the vascular system. यहाँ पे xylem और phloem वो completely developed है. Then you can say the flowering part contain the male and female reproductive system. Male और female reproductive system यहाँ पे present है. तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट फ्लावर्स के अंदर, दैट इज नोन एज स्टेमन. ओके. And when we are going to divide the stamen in different parts, is contain two parts. One is anther and the second one is the filament. Anther contain pollen grains. That is a very powdery, yellow powdery like substance that contain millions of pollen grains in a small anther. Then a tube-like structure, or we can say a structure that attach anther to the base of the flower, that is known as filament. Okay. The female reproductive part here is known as pistil. Pistil is divided into three parts, that is stigma, style, and ovary. Stigma provide base for the pollen grains.
Style provide a passage for the entry of pollen tube towards the ovary. Ovary contain two or more than two ovules. Within the ovules, there is a present the female gametocytes known as embryo sac. Embryo sac formation is preceded by meiosis, and each embryo sac is haploid in nature. Okay, so we can say जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, और मेन जो इनको हम लोग नाम देते हैं दैट इज पिस्टल एंड स्टेमन. Each embryo sac in a female ovary consists of three egg apparatus, one egg cell and two synergid cells, three antipodal cells and two polar nuclei. Polar nuclei बाद में fuse हो जाते हैं and form diploid secondary nucleus over here. What is the function of now the synergid cells and the antipodal cells? Synergid cells help in the entry of the pollen tube, whereas the antipodal cells provide the nutrition in the embryonic stage. Okay, whenever the pollen grain after the pollination process means when it gets transferred from anther to stigma by various agencies. For example, the agency may be wind, or it may be water, or any bird or animal. The pollen grains from anther moves towards the stigma, and on stigma it gets germinate, and resulting a pollen tube that moves towards the style and reaches the ovule. तो pollination के बाद में जो एंथर से pollen grain रिलीज हुआ है वो स्टिग्मा पर आएगा. स्टिग्मा पर आके जब उसको कंडीशंस फेवरेबल मिलेंगी उस टाइम पर वो pollen ट्यूब की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, और pollen ट्यूब की फॉर्मेशन होने के साथ में pollen ट्यूब मूव करती है टूवर्ड्स द ओवरी. ओके, और सिनर्जिड से एंटर करेगी. सो जैसे ही pollen ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होगी उसी टाइम पे दो मेल गैमेट डिस्चार्ज होकर मूव करेंगे टूवर्ड्स द ओवरी. One of the male gamete fuse with the egg cell and to form a zygote known as syngamy. The other male cell, or you can say male gamete, fuse with the diploid secondary nucleus, जो कि polar nuclei से बने थे, to produce a triploid primary endosperm nucleus, or we can call it PAN. तो यहाँ पर दो बार फ्यूजन हुआ. एक फ्यूजन हुआ एग सेल और मेल गैमेट का, दैट फॉर्म जाइगोट, और दूसरा जो फ्यूजन हुआ वो हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस का और एक मेल सेल का. सो डबल फ्यूजन हुआ यहाँ पे. दैट्स व्हाई द angiosperms have a unique event that is known as double fertilization, or we can call it triple fusion also. Okay, the zygote developed into an embryo. एम्ब्रियो आपके सिंगल कॉटिलिडन भी हो सकता है, डबल कॉटिलिडन भी हो सकता है. The pan develop into endosperm which nourish the developing embryo. Synergid cells, antipodal cells ये degenerate हो जाएंगे. Antipodal तो nutrition provide कर रहे हैं, synergid cells degenerate हो जाएंगे. And during this event the complete ovule develops into the seeds and the ovary developed into the fruit. Okay, so with the help of diagram, here I am showing you the life cycle of angiosperms. The life cycle of angiosperms again containing two different stages, that is saprophytic stage and gametophytic stage, means that N stage or 2N generation. Okay, so the saprophytic stage have a complete development जिसके अंदर flower present है, and that is having 2N generation. It is having the parts of the reproductive system, that is stigma and you can say style and ovary, that is a part of female reproductive system, whereas anther and filament, that is the male reproductive system. So anther form, from anther there is a formation of microsporangium takes place, and microsporangium give rise to
the microspores, and these microspores give rise to pollen grain. So whenever we are going to study the complete reproductive system, or you can say the reproduction of within the flower, we are going to study how these microscopes get generated with the tetrad condition. ओके, इसमें सिर्फ हमने इतना समझना है बेटा कि यहाँ से एंथर जो है, एंथर से आपके माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. माइक्रोस्पोर्स आपके पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि आपके गैमेटोफाइट्स हैं यहाँ पे. Whenever these gametophytes moves towards the egg cells, pollen grain की जैसे ही आपके egg cells के ऊपर पहुंचेंगे फ्लावर के, वहां पे जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं वहां से दो गैमेट्स रिलीज होकर एक एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरा पोलर बॉडी के साथ में फ्यूज हो जाएगा. जो एग के साथ फ्यूज हुआ वो तो जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा. ओके, वेयर एज जो दूसरा गैमेट फ्यूज हुआ है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करके धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म. So let's study the various major group of angiosperms. The angiosperms are divided into two major groups, that is dicot and monocot, or we can call them dicotyledon and monocotyledon. Monocotyledon is having the embryo with only a single cotyledon. ओके, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो सिंगल कॉटिलिडन से है. डाइकॉट में टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट. आपने देखा होगा जो आपका मक्की का दाना होता है, मक्की के दाने को आप दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते. सो दैट इज अ मोनोकॉट. Whereas you have seen the gram seeds, चना देखा है आपने, चना आपको इजिली दो पार्ट्स में बीच से डिवाइड हो सकता है. दैट इज डाइकॉट. ओके, when we are talking about the veins होती हैं जो आपकी लीव्स के ऊपर आपको लाइंस नजर आती हैं. So monocot में leaf venation is parallel, whereas is dicot it is net-like structure, or you can say it is having a network in it. Okay, तुमने शुगर केन देखा है, शुगर केन के ऊपर जो शुगर केन के जो पत्ते होते हैं या बैम्बूज के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर आपको पैरेलल वेरिएशन मिलेगा, और नॉर्मली आप जो आसपास पेड़ पौधे देख रहे हैं उस पे आपको नेटवर्क मींस रेटिकुलेट, जिसको रेटिकुलेट बोलते हैं, रेटिकुलेट वेरिएशन मिलेगा. ओके, वस्कुलर बंडल जो आपका मोनोकॉट में है वो कॉम्प्लेक्सली अरेंज होता है और यू कैन से रेंडमली अरेंज होता है. वेयर एज इन dicots it is arranged in the form of ring like structure banata hai. When we are talking about the roots, monocot is having fibrous roots and dicot is having tap root जिसमें एक मेन रूट होगी जिसकी सब ब्रांचेस आ जाती है. फाइब्रस जैसे कि आपने घास उखाड़ के कभी अगर देखी है तो घास की जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है. When we are talking about the floral parts, it is in the multiple of 3. monocot में मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, मींस जो उसकी स्टेमन होगी, जो सॉरी जो उसकी सेपल होगी, पेटल्स होंगी, दैट इज इन द मल्टीपल ऑफ 3. वेयर एज द फ्लोरल पार्ट ऑफ डाइकॉट में बी इन 4 or 5 multiples. Okay, it may be 5, 10, 15 in such a way. Okay, now let's study alteration of generation in the plant life cycle. हमने अब तक जो भी प्लांट्स पढ़े हमने उन वहां पर दो वर्ड्स को बार बार यूज किया है, दैट इज गेमिटोफाइट एंड सेप्रोफाइट. ओके, सो these what are these are the two stages that is present in a plant. Okay, so in plant haploid और diploid cells दोनों present होते हैं. So both haploid and diploid cells can divide by mitosis process. The ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid, and alteration of generation. The haploid plant body produce gametes by mitosis process, and these are represented as a gametophytes. इनको आप gametophytes बोलते हो जो haploid nature में है, means N nature के हैं, और you can say जिसमें chromosomes जो हैं वो pair में present नहीं. After fertilization, zygote divide by mitosis to produce diploid stage, or you can say diploid sporophytic plant. Okay,
हेप्लॉइड स्पोर्स हमेशा प्लांट में म्यूसिस प्रोसेस के बाद में प्रोड्यूस होते हैं. These in turns divide mitosis. पहले वो म्यूसिस से हेप्लॉइड बनेंगे, डिप्लॉइड सेल्स म्यूसिस से हेप्लॉइड बनेगा, ओके, और बाद में माइटोसिस से वो हेप्लॉइड बन जाते हैं, ओके. So now let's study the different life cycles of the plants. Here, with the help of diagram, I am showing you the heplantic life cycle of a plant. In this, saprophytic generation is represented only by one-celled zygote, and there is no free-living saprophytes. Okay, यहाँ पे क्या है, saprophyte generation है, single cell zygote है, कोई भी free living saprophytes नहीं है. Meiosis से भी formation किसकी होगी, haploid spores की होगी. Haploid spores माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, गैमेटोफाइट्स बनाएंगे. तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक फेज है, that is gametophyte stage, that is free living or it is very small, okay, बहुत छोटी होती है. For example, in volvox or you can say in algae, the heplantic life cycle is present. The second type of life cycle is diplomatic life cycle. In this life cycle, the diploid sporophyte is dominant over the gametophytic phase. So this is an independent phase, or you can say that this is the dominant photosynthetic phase, as we have seen in angiosperms and pteridophytes and in gymnosperms. Okay, so these phases have the maximum life, whereas the gametophytic phase is having represented by a single, or you can say too few cells that are haploid in nature. Okay. The third type of life cycle is haplodiplomatic, or you can call it intermediate life cycle. यहाँ पे क्या होगा, इक्वल डिवीजन है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइटिक फेज का. तो यहाँ पे दोनों फेसेस जो हैं इक्वली डिवाइडेड हैं. फॉर एग्जांपल, इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट्स एंड इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट. कुछ एल्गीज हैं जैसे एक्टोकार्पस एंड पॉलीस्पिनोसिफोनिया, इनके अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स मिलेगी. Now, at the end of this chapter, let's study what is the difference between the gymnosperm and angiosperms. As we have studied, in gymnosperm, these are mostly trees, whereas angiosperms are having a wide variety starting from herb up to the trees. It is having herb, shrub and trees. Gymnosperm is having vascular bundle, but that is having the absence of xylem vessels and companion cells of phloem, whereas in angiosperm, xylem vessel and companion cells are present. Gymnosperms, cone are present, whereas in angiosperms, cone are absent. In gymnosperm, these are non-flowering plant, whereas angiosperms are the only flowering plant. Gymnosperms, the strobili are unisexual, whereas the angiosperms, the flower may be bisexual as well as unisexual. The ovule is naked in gymnosperm, whereas the ovule is covered inside the ovary in an angiosperm. Ovary is absent in gymnosperm, whereas in angiosperm, ovary is present. The reproductive parts like style, stigma, these are absent in gymnosperm, whereas these are present in angiosperms. In similar way, double fertilization is absent in gymnosperm, whereas double fertilization is present in angiosperms. Endosperms are haploid in nature in gymnosperm, whereas endosperms are triploid in nature. So in this video, we have studied about the life cycle of the angiosperms, the alteration of life cycle in flowering plant, and the difference between the angiosperms and gymnosperms.